I want to know what's your net worth and how did you go about building this corpus? I have much more than what I would consume all my life. In 10-12 years, I had a crore of cash net worth. That might be worth something like 50 crore today. Wow. ये म्यूचुअल फंड का जादू है, इक्विटी का जादू है। अगर आप घटिया फंड भी चूज कर लेते हैं ना और 5 साल तक SIP करते हैं, तब भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। Do you think कि एक 5,000 rupees की SIP से you can realistically make your first crore? Yes, absolutely. There's AI, ESG, EV also. Do you think कि these are sustainable themes that people should be investing into? At this point, they don't look sustainable. हाय एवरीवन एंड स्वागत है आपका INDmoney के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। मेरा नाम है शगुन एंड आज का सेटअप आपको थोड़ा नया और थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। आज हम अपने गेस्ट से मिलने आए हैं। वी हैव विद अस मिस्टर धीरेन्द्र कुमार, हु इज फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एट वैल्यू रिसर्च। Hi sir, how are you? Thank you. I'm very excited for the conversation and I want to talk to you about a lot of things, but I want to focus today on how to build your net worth and how to build your mutual fund portfolio. Okay. And honestly, I want that by the end of this video, जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, they should have a guideline on how to build their portfolios and the do's and don'ts that they should stick to. Sure. So that sound good to you? Yes, very much. That is what I've been, doing to make a living for last 35 years now. Amazing. So I want to know what's your net worth and how did you go about building this corpus? My net worth, the absolute amount doesn't matter. But, the real thing is that I have much more than what I would consume all my life. And also, my net worth is not a true reflection of all my earning for the reason that, I founded Value Research. My first 5-7 years, all my earnings, all my profits went into building the Value Research. That is the equity of Value Research. Yeah. I think my personal net worth, it became a crore or so after 10-12 years. Wow. So how was the journey to build that first crore? One is that, if I have to really, for anybody viewing this, your state of mind is broadly can be divided into 3. Okay. One is that when you just don't have enough, you get the money and you spend it all and, you have things lined up. Yeah. And that carried on in my case, for many, many years, for 7-8 years. Initial years, I barely had enough. Then, so your mindset changes quite substantially. Yeah. When you don't have enough for the essentials. True. Then the moment you have essentials, but I think, I feel very happy about that phase. Looking back, of course, at that point, I was not happy that I don't have enough. Yeah. But looking back, I think it was very useful in a sense that it helped me form habits, which is, I can live within my means and not making enough money, barely meeting your ends, and still living with dignity, respectfully. And I think those years were very nice. I think it took me 10 to 12 years because, as I was telling you that there are 3 phases. You don't have enough. Then you have little more than enough, but you still have to prioritize. Yeah. And that was the phase where the show-off in the society was just coming up. Yeah. The only car we had was Maruti 800. And then suddenly you had the option of picking any of the 10 brands. Yeah. Or the bigger cars or the bigger homes. So, all these things became lifestyle issues. I was not gripped by this. So I think, I just was very objective in my spending. And when I had my first crore, maybe it was entirely because, by that time I was very low with my spending and lower with my lifestyle expectations, being choosy about it. So in 10-12 years, I had a crore of cash net worth. Wow. But that was, 10-12 years. It looked like, but the worth of that 1 crore after 10-12 years, which is 2001 or 2002, was quite significant because that might be, worth something like 50 crore today. Wow. So what I've observed is that your mindset towards money has changed quite a lot towards your journey to 1 crore. But जब आपने वो 1 crore finally earn करे, उसके बाद did you feel like कि आपकी portfolio strategies में कोई change आया हो या आपके money mindset में after that first crore कोई change आया हो? नहीं, उस समय तक हम लोग इतना पापड़ बेल चुके थे कि आसानी से खर्च ही नहीं होता था और आपके शौक थोड़े कम हो गए थे और फिर शौक को आप बड़ी बारीकी से देख रहे थे क्योंकि ना, और दूसरा चीज़ की वैल्यू रिसर्च में मैं हमेशा जो पैसा खर्च कर रहा था, अगर करता तो वो मेरा पैसा कम होता। बहुत सारे लोग जब कंपनी चलाते हैं या कंपनी किसी और की होती है या कंपनी में कोई और पैसा लगाता है और आप अपनी कंपनी
आप चला रहे होते हैं मन लगा के, लेकिन फिर भी वो आपका पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी पैसा था वो मेरा था। अगर मैं कुछ खर्च करता तो कंपनी का, जो कि मेरी कंपनी है, उसका नेटवर्थ कम होता, उसका कैपिटल कम होता। अगर मैं अपना करता तो मेरा तो कम होता ही होता। और इसलिए मेरी ज़रूरतें काफ़ी ऑब्जेक्टिव थी। मतलब आप एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी गाड़ी पुरानी हो गई थी, ख़राब होने लग गई थी, तो लगा कि अब बदल लेना चाहिए। तो मैं और मेरे भाई बहुत दिन तक विचार कर रहे थे। मेरा भाई एक बैंकर है, तो वो बोल रहा था ले लो, पैसे तो हैं ही तुम्हारे पास। मैंने भी सोचा कि हाँ ले लेते हैं, पैसे हैं, और अब ये कब थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो हम लोग दुकान पहुँचे और उधार लेना नहीं था, चेक लिख करके तो उसी से थोड़ा दुकानदार थोड़ा चिंतित हो जाता था कि हर एक आदमी लोन लेकर के ही गाड़ी खरीदता है। पर चूंकि लोन लेने का हमारा माइंडसेट कभी बिल्ड ही नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा देखता था कि अगर पैसे नहीं हैं और आप सामान खरीद रहे हैं और आप उधार लीजिएगा तो ब्याज देना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस समय 14% पर ब्याज पे आप बोरो करते थे। तो मैं गाड़ी खरीदने गया बड़ी, और जब मैंने सोचा कि उसी समय ऑल्टो लॉन्च हुआ था, और मैं खरीदने गया था बलिनो, मारुति सुजुकी का। तो मैंने जब देखा कि ये 11 लाख रुपए की गाड़ी है और ये 3.5 लाख की गाड़ी है, और मैंने सोचा कि मैं अपने घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है, तो मैं खरीदने गया था बलिनो और लेके आ गया ऑल्टो। और मेरे दोस्तों ने और मेरे घर वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि भाई आप बड़े अजीब आदमी हैं, जाते हैं खरीदने कुछ और लेके आ जाते हैं कुछ, और दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, 3 गुना ज़्यादा दाम का है। पर फिर मुझे लगा कि जब मैं 1.5 किलोमीटर रोज़ चलाता हूँ गाड़ी, और ऑफिस आता हूँ, खड़ा कर देता हूँ और शाम को वापस चला जाता हूँ 7-8 घंटे के बाद, और दोनों में एसी काम करता है, लॉन्ग ड्राइव पे मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा, रेगुलर रन मेरा इतना है, तो मुझे अपने डिसीजन पे बड़ा गर्व था कि मैंने एक बारीकी से ठीक, और जो गाड़ी की जो प्रिंसिपल ज़रूरत है कि आपके पास आज़ादी होनी चाहिए जब आप कहीं जाना चाहिए, तो वो उससे भी पूरा हो रहा था। और नई गाड़ी थी, जो मेरा जो रिलायबल गाड़ी मेरा पुराना नहीं रहा था, उसकी चिंता दूर हो गई। एक प्रैक्टिकल तो सॉल्यूशन। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं, जब मैं देखता हूँ कि जब आपके पास होता बलेनो का पैसा है और आप जाके BMW खरीद देते हैं, उसकी तुलना में जब आपके पास है बलेनो का पैसा और आप जाके ऑल्टो खरीद देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बदला हुआ मेंटल फ्रेमवर्क है। Okay, so for any person, for a normal person who has a decent salary, what do you think उनको अपना investment journey कब शुरू करना चाहिए? And do you think that there's a checklist that they should follow or ensure कि सारे boxes tick हो गए हो before they really start investing? एक चेकलिस्ट है, और हर एक आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। Okay. अर्लीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप काम शुरू करते हैं तब शुरू कीजिए। अगर आप किसी तरह नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जब ध्यान में आए तब शुरू कीजिए, और बहाना मत ढूंढिए। इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। उसका कारण क्या है कि शुरुआत में ही आपके करियर में एक ऐसा फेज होता है जब आपके पास 1000 ज़रूरतें होती हैं। आप घर भी सेटअप कर रहे होते हैं, बेडशीट भी खरीदना है, माँ के लिए भी गिफ्ट खरीदना है पहले तक तनख्वाह में से, मतलब आपकी ढेर सारी इच्छाएं होंगी, और पहली बार आपके हाथ में पैसा आया होगा जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है। आप जैसे चाहे वैसे आप खर्च कर सकते हैं। वैसी स्थिति में बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस समय आपको एक मन के अंदर, मतलब आप अपने आप से बात करते हैं कि कोई बात नहीं, अगले महीने से शुरू कर देंगे, या 6 महीने जानने के बाद भी। पहले तो आपको, चूँकि हम परिवार एक ऐसे समाज में आते हैं जहाँ पे आपके पढ़ाई करने तक आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कुछ अंदाज ही नहीं होता है। जितने पैसे की ज़रूरत है वो अपने पेरेंट्स से ले लीजिए, और पिताजी के और परिवार के होटल में आप खाते हैं, वहीं से आप रहते हैं, मतलब आप बेसिकली गेस्ट हैं 20 साल के लिए, और पैम्पर्ड गेस्ट हैं। और जहाँ तक साधन होता है, और हर इकोनॉमिक स्ट्रेटा में पेरेंट्स, तो मैंने देखा है कि वो ज़मीन बेच के भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या वो बोरो करके भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो अब ये हम लोग के यहाँ ये एजुकेशन को काफ़ी वैल्यू अटैच किया जाता है, और राइटली सो। तो इसलिए हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वर्थ क्या है, इसको कमाने में कितना एफर्ट लगा है। कई बार नहीं लगता है, क्योंकि समय के साथ वो चीज़ें कंपाउंड करती जाती हैं। शायद बहुत पेरेंट्स के लिए आसान हो, अधिकतर पेरेंट्स के लिए मुश्किल काम होता है। तो जब आप वहाँ से शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन का जो डेफिनेशन है
कि इन्वेस्टमेंट का जो क्लासिकल डेफिनेशन है कि ये पोस्टपोन्ड कंजम्पशन है। तो जब आज ही आपके पास ढेर सारा चीज़ कंज्यूम करने को है तो पोस्टपोन क्यों करें? तो पोस्टपोन करने के बाद का तो मौका ही नहीं मिलता है। तो आप सोचते हैं कि भाई आगे देखा जाएगा। और चूंकि ये पोस्टपोन कंजम्पशन है और आपके ढेर सारे कंजम्पशन का लाइन लगा हुआ है, वो लाइन लिस्ट खत्म ही नहीं होता है। जब ये खत्म हो जाता है तब तक गर्मी आ जाती है, तब तक आपको माउंटेन में जाना है, तब तक कुछ जाना है, तब कुछ बड़ा खर्चा, छोटा खर्चा, घर चलाने का खर्चा, तो उसमें लोगों के लिए शुरू करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है शुरू करना। अगर जहाँ तक चेकलिस्ट की बात है तो वहाँ पे लोगों को देखना चाहिए कि आप एक इमरजेंसी फंड से शुरू करें कि कल आपकी नौकरी चली जाए तो आप 2-3 महीने आप ढंग से रह पाएँ। लेकिन अगर आप ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहाँ पे अगर नौकरी चली जाए और पिताजी को आप फ़ोन करेंगे तो पैसा आ जाएगा, तो वो आपके इमरजेंसी फंड है, तो उसके बिना भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन पर से गिर जाते हैं स्टेशन पर उतरते समय और आपका टांग टूट जाता है और आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। अगर वो बड़ा खर्चा आपके सेविंग्स प्लान को और सब चीज़ को डिसरप्ट कर देगा, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपके पिताजी को आप फ़ोन करेंगे और वो आपकी मदद करने आएंगे तो वो भी आपके वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन उनका पैसा बचेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कराना मुझे लगता है कि हर एक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इंडिपेंडेंटली रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खर्चे काफ़ी बड़े हो सकते हैं कई बार। तीसरा है कि आपको, अगर आपका परिवार बन गया है, अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं, अगर आप कोई भी आपके ऊपर फाइनेंशियली निर्भर करता है, अधिकतर परिवार में हम लोग जिस तरह के परिवार में बड़े होते हैं उसमें अगर हम कल नहीं रहें तो हमारे पेरेंट्स को बहुत दुख होगा, लेकिन शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा या वो क्रॉस नहीं करेगा उनके दिमाग में। लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए, आपका परिवार आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है कि आप कमाने वाले मेंबर हैं, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए जैसे आप काम शुरू करें, क्योंकि आपके पास उतनी पूंजी होने में बहुत समय लग जाएगा कि आप नहीं रहे तो आपके परिवार को मदद मिल पाए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेने से तो, क्योंकि आपके लाइफ का एक वर्थ हो गया है और उस पर किसी का डिपेंडेंस है, तो आपके लाइफ इंश्योरेंस का फ्रेमवर्क यही होना चाहिए। ये 3 चीज़ होने के बाद चुपचाप एक इक्विटी फंड में पैसा लगाइए। अगर आप घबराते हैं तो किसी बैलेंस फंड में पैसा लगाइए। तीसरे तरीके के फंड के बारे में मत सोचिए। और तीसरे तरह के फंड के बारे में अगर आप सोचने लग जाते हैं तो आंख बंद करके लगाइए, SIP कीजिए, एक साथ मत लगाइए। अगर आप घटिया फंड भी चूज़ कर लेते हैं ना और 5 साल तक SIP करते हैं, तब भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने आज तक म्यूचुअल फंड की दुनिया में किसी व्यक्ति से मैं आज तक नहीं मिला हूँ जिसने 5 साल तक SIP किया हो और वो दुखी हो कि उसको अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। एक भी नहीं। और मैं पिछले 35 साल से, बल्कि जितने लोग भूल गए लगाने के बाद दुखी होकर के कि लगाया और नुकसान हो गया, उसके बाद वो कोसते रहे कि ये बहुत घटिया फंड होता है, कभी नहीं लगाऊंगा, और जब भूल गए और 10 साल के बाद आए तो पता चला कि जादू हो गया है। तो ये म्यूचुअल फंड का जादू है, इक्विटी का जादू है, लंबे समय का जादू है। इसको बहुत कम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि किसी को कोई ट्रिक पता है और वो जानना ज़रूरी है। नहीं, इसको समय चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए और कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फंड्स राइट नाउ, राइट? एंड आई फील लाइक कि एवरी पर्सन इज सुपर कंफ्यूज कि इतने 100 फंड्स में से कौन सा सिलेक्ट करें। तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली पिकिंग द राइट फंड फॉर योर सेल्फ एंड नॉट गेटिंग कंफ्यूज कि इतने सारे में अब कौन सा पिक करें? दैट्स ट्रू ऑफ ऑल डिमेंशंस ऑफ लाइफ। इफ यू गो टू बाय शैम्पू you will have the same problem. So that is true for mutual fund as well. It's a consumer product because it's an aspirational thing. It is, you are postponing your spending today to invest for the future. So a lot of people weave a story around it. People don't look by based on the objective number that, okay, this is done X, Y, Z and I'll invest because of these variables. They just buy into the story. And humans connect to a story much easier. That is why we have so many stories, so many mutual funds or so many type of mutual fund. Officially, there are 16 kind of debt funds. And there are 16 kind of equity fund. This is officially sanctioned open-end debt funds. And besides that, you have these index fund and all kind of in the specialty sector they can have another hundreds of them. So let that be. There are only 4 kind of useful products. Money for few days, think of liquid fund. And one will do. There is no great difference between a great liquid fund and a lousy great liquid fund. The liquid fund universe is so narrow that if you just drop the funds with the highest, top quartile based on expense, everything will converge in the in the range of
1/4 of a percentage. Oh, wow. The best fund will be 7% and the worst fund will be 6.75%. So you are not, and you don't know which one will do well. So don't spend time. Invest in a liquid fund or ultra short term bond fund or a money market fund, and that is it. Don't complicate it. Money for few years, but within 2-3 years, make sure that you are not taking too much of equity risk. For a negotiable goal, you think that okay, you want to buy a car in next 2-3 years, and if you are unable to buy the car in 3 years, you can well buy it in the 4th year. So it's little negotiable. That may not be true when your child is going into the college, is into the school. That is non-negotiable. So I'm talking of negotiability of a goal and a non-negotiability. The non-negotiable ones should be invested in fixed income fund only. Okay. Predictable return and predictable return of capital. And over 2-3 years period, you will not be disappointed. You will not get a nasty surprise, and that is very important. Negotiable goals, you can put in something, which is like a conservative hybrid fund, which is, 70-80% fixed income, 20-30% equity, and that will help you reach there without too much of turbulence. Money for a couple of years, and that I mean 5 years and more. For that, if you're a conservative guy, start with the aggressive hybrid fund. Okay. If you are a run a middle of the road person, you understand, okay, market goes up and down, you appreciate that, invest in a multi-cap fund or a flexi-cap fund. That will get you a wide exposure, and just start with one fund. Okay. If you are a person who is venturesome, you want good return, might as well buy a mid and small cap fund. Might as well buy a small cap fund. Make sure that you are buying these generic categories, not a sectoral fund, not a thematic fund. Do your SIP. Don't buy at one go. Initial investment should never be one-time investment. Reason is that, when you are starting, you are compromising, you are deciding not to spend it while you still have something to spend on. And when you invest that money, and when you invest lump sum, assuming that, you have saved 1 lakh rupees and you have choice of, spending it and investing it. Yeah. The moment you are investing it, you are coming it with great expectation. And your initial money, when you invest at one go, that 10% decline in the market, your 1 lakh rupee actually is now 90,000. When you see that 90,000, it's very unnerving. Yeah. You start relating that, okay, this is my 4 months of saving. It has taken so long for me to accumulate this 1 lakh rupee, and one day it went down. Yeah. And you are not acclimatized to the market. You're not used to this market. That is why you need to really stagger your investment. Yeah. So that if you are investing your 10,000 rupees, spreading it over the next 10 months, 12 months, then what happens is that market goes down by 10%. You are disappointed. Nevertheless, you think that, okay, next month I'm buying cheap. You feel little happy that, okay, I'm also able to buy cheap. Yeah. So that is why you should be spreading your investment. That is why SIP. Yeah. And SIP is not a trick that, it always works. It just helps you manage, navigate, and get used to it. Yeah. Acclimatize yourself better. So start with any of these vehicles for the long run. Got it. And which ones to choose? Just look for the ones which are beating the benchmark. Okay. On a 5-year basis. Keep it very simple. And if there are 10 funds which are beating the benchmark in a narrow range, choose the one with the lowest expense. End of the story. That way, you will be able to eliminate this, the problem of plenty which every investor faces. Yeah. And you will be able to choose with confidence. And if you are following the step of doing your SIP, you will not be unnerved by the swings that we see in the market. Amazing. But the thing is that मैं एक investor हूँ, and when I look at the news, of course I get scared because there is so much that is happening right now. So do you think that as a very normal middle class investor who kind of represents a lot of investors that are in the country right now, do you think कि मेरे को सच में anxious होना चाहिए considering everything that is happening? देखिए, मार्केट को तो आपके बारे में कुछ पता नहीं है कि आप मिडिल क्लास के आदमी हैं कि अपर क्लास के आदमी हैं कि बहुत लोअर मिडिल क्लास के आदमी हैं, या वो जो मिसेस सारा भाई बोलती हैं बहुत मिडिल क्लास हैं आप। तो बाजार को कुछ नहीं पता है। बाजार तो रोज ऐसे ही है, और ये बाजार का नया चाल नहीं है। पिछले 100 साल से बाजार ऐसा ही है। अगले दिन क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। हाँ, और मतलब आप देखेंगे कि बाजार में ना एक बहुत खास बात है कि हमें नहीं पता होता है कि कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, 7 दिन के बाद कैसा होगा,
1 महीने के बाद कैसा होगा, लेकिन ये हमें पता होता है कि 5 साल के बाद कैसा होगा, 10 साल के बाद कैसा होगा। किसी भी 5 साल 10 साल की पीरियड में बाजार ऊपर गया है, ओके, और कभी भी अगले दिन के का आप नज़रिया देखिएगा तो गेस करना एकदम टॉस करने के बराबर है, तुक्के के बराबर है। तो बाजार तो ऐसा ही रहेगा। इससे आप परिचय कर लीजिए कि बाजार नहीं बदलने वाला है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ओके, लोग ये जो वोलेटिलिटी का जो डेफिनेशन है, मुझे अंग्रेज़ी में समझ में आया था, जो भी मैंने बचपन में अंग्रेज़ी पढ़ा था, या डिक्शनरी का जो मीनिंग है कि वोलेटिलिटी मतलब जो चीज़ ऊपर नीचे जाता है। और ये टेलीविज़न के ज़माने में और ये जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री के ज़माने में, जो कि बाज़ार खुलता है और उसके बाद बंद होने तक मैच की तरह उसका कमेंट्री आता रहता है, उसमें लोगों ने वोलेटिलिटी का मतलब बदल दिया है। वोलेटिलिटी मतलब गिरावट, या, और वोलेटिलिटी मतलब गिरावट नहीं, ये ऊपर नीचे होना वोलेटिलिटी है। या, कम समय में बाजार गिर सकता है, लंबे समय में हमेशा बढ़ता है, और लंबे समय में अगर बाजार बहुत गिरता है तो फिर बड़ी समस्या है, हम गलत देश में रह रहे हैं। I've seen a lot of influencers saying this कि you start your SIP and after XYZ number of years you'll get your first crore. Do you think कि एक 5,000 rupees की SIP से you can realistically make your first crore? Yes, absolutely, but there are two, three things to it. One is that there is an easier way. Start with 2 crore and you will actually end up with a crore. Yeah. No, but jokes apart, Yeah. 5,000 rupees if you start, then I think, first 2-3 years you keep doing your 5,000 rupee, and if there is an increment, then make it 5,500 or 6,000. Yeah. But I think one should not look at 5,000 rupee. Life does not move in a straight line. You get out of your college and you get a job. You get a job when you have not proven yourself who you are, what you are capable of, and somebody is taking a chance on you, is giving you some responsibility, and in return for your time he is giving you some money. And if you are able to do it for 2-3 years, this is habit formation. Yeah. This is actually a toddler's thing. You are not saying that you are born and you are standing on your feet and you start running. You really don't become a marathoner or a sprint runner. You are basically forming your habits. Then if you grow, because for any plan to succeed with investment, you need to earn. Yeah. Then you need to save, and then you need to put it to work. So earning, saving, and investment, this is the prerequisite of doing something. If in the initial years you start with 5,000, so that when you start earning 3 lakh rupees a month, then you are able to invest more. The value of 5,000 rupee SIP is not in the 5,000 rupee becomes 60,000 rupees in a year. The value of 5,000 becomes 60,000 rupees in a year is one of the biggest demonstration which has impact on your mind, that you are a person who has 5,000 rupee. Yeah. And there are all your friends who have also 5,000 rupee, but you have a cash net worth of 75,000 rupees. Yeah. Once you have done this and you have 7-8 lakh rupees, imagine 5,000 rupees 5 years ago. Yeah. And now 10% increase, which could be a very normal year or maybe a poor year in equity market, and you will still earn 75,000 rupees. Yeah. And then, in 5-7 years time, you will have a situation that the money that you are putting and the appreciation of your investment is more than the money that you are putting. Yeah. And that has a magical impact on your mind. Yeah. And you become a believer. You become a disciplined investor. You become patient. Let's say I'm investing right now in 3 mutual funds, right? Now my question to you is कि I don't know कि उस mutual fund में constituents क्या हैं, and how do I make sure कि मेरा portfolio is genuinely diversified, and जो भी constituents है, they're actually not overlapping. So how do I go about assessing this? No, one is that choose a diversified vehicle. Okay. The claim is that, it is claiming that it is not a narrow fund, because when you choose a large cap fund, it's not diversified. Oh, really? It will be diversified across sectors, but it will only be large companies. Yes. That's the deal. Likewise, if you invest in a mid-cap fund or a small-cap fund, it will be smaller companies. It might be diversified there, but the problem is that some of these companies, many of the companies or many of the sectors are not meant for small cap. Yeah. You will not have a cement company as a small cap. You might have a tiny company somewhere, but not a meaningful one.
So there are many sectors. You don't find metal companies in the small cap. So you need to choose a vehicle which will get you exposure to a very diverse set of companies across the market. Then comes, there are different styles. There are growth managers, and then there are value managers. Broadly speaking, there will be many kind of contra and this and that. But broadly, there are two kind of fund managers. Okay. One who are looking for reasonably priced stocks, and there are fund managers who are willing to pay some premium for a stock which commands the premium for the growth that they are able to deliver. So you need a combination of this, because in the market, different things do well at different times. Every part of the market is cyclical. Every sector is cyclical. Every style is cyclical. Every segment, large, mid, small, micro, is cyclical. So you need to have a broad exposure to the market. And that is why mutual funds come in. So make sure that your vehicle is diverse. Okay. And after that, if you have to look at, are you really diversified? What is your spread? What is the overlap? Then maybe, just set up your portfolio at Value Research Online, and it will be able to tell you without any cost. It's a free service. Okay. Where nearly, 2-3 million people have been maintaining, from the days of manually tracking their investments, they have been doing there at Value Research. Wow. So, हर कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड सही है, which absolutely makes sense. But how do you know कि Ad भी चलता है इसका. yeah. But how do you know कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? Can we talk about maybe 3 or 4 metrics or numbers or just signals that an investor should look at? You have to be very clear about what do you need. Money for few days, money for few years, and money for many, many years. Yeah. Broadly, if you are decided, then you have to set your principle that I need to be very diversified with this. I need to be very conservative with this. And based on this, just choose one of the two categories. For example, money for few years. There are 4-5 category of funds from which you should choose, which you should combine together and then look at the good fund. One is the multi-cap fund, then the flexi-cap fund, then the large and mid-cap fund, then the value fund. These are the diverse category. And if you need to save taxes, maybe the ELSs. Okay. These are funds which are go anywhere funds. They are not large cap, mid cap. They can go invest anywhere. Based on, once you have chosen this universe, I think, if you're doing it at Value Research, look at the ratings. This is nothing but risk adjusted performance matrix. Drop all the funds which are 3-star and below. Okay. That will reduce your universe to about 10, 15, 20. The remaining ones, look at the funds which have beaten the index, their own benchmark, in 3 years' time and 5 years' time. You will be left with handful. And in the handful, if you want to invest in one, or if you want to invest in two, or if you want to invest in three, just sort them by the expense. You are sorted. There are a lot of new funds in the market, a lot of new different instruments in the market, right? I've seen on the internet that there are passive funds, ETFs, index funds, बहुत कुछ चल रहा है. AUMs for these funds has gone from 7 lakh crore to now 11 lakh crore in a year, which is a massive jump. But I want to ask you, do you think these are actually sustainable investment instruments? या ये कोई trend है that people are excited about? It's a new name and people are like, okay, अब मेरे को इसमें invest करना है. What do you think this is? No, this is very sustainable. Okay. This will work. And these are not individual investors investing in these funds directly. The way it is happening is that, index funds have become the default instrument for employee provident fund. So if you work in a company, the company opens your provident fund account and it deducts an amount which is 8.5% from your salary. It puts some money from its own side. There is a law which mandates that every company should be doing it for all employees below a certain threshold. And that money gets into employee provident fund. Employee provident fund puts 10 or 15% of that money into index fund. And that is why you have this money flowing into index fund. Okay. Then comes, you have these, NPS, which is putting money into these index funds as well, or those companies, top 200 companies. This, the institutional mechanism, which is channelizing individual investors' money through provident fund into them. Then many companies, some investors have also taken fancy to these index funds. But I think, it is far from
gaining popularity, because the story of the mutual fund, that here is the EV fund, or here is that defense fund, and Yeah. here you can do some magic, and this is Yeah. where the magic happens. Or investors' favorite pastime is looking at recent past performance and chasing returns. That is where they invest. So that money getting into small caps or micro caps or this or some exotic index, don't get carried by this number. And I think index fund is a good way to start if you're unable to decide, if you're unable to do all the things which I was saying, that look at the fund, look at the large and mid cap fund, flexi cap, multi cap, ELSS value, and then do the sorting, look at the comparison, and drop the funds below 3 star. So that might be hard work. Choose an index fund. A lot of people, you will do no better, no worse, just as good as the index, and that might be good enough for most people. So I think this is actually the beginning. We never had this in the past. As I was telling you, that I haven't come across anybody who has done a SIP for 5 years and ever lost money. I have come across all kind of investors who have ventured in any other way, tried any other thing, followed the trick, gotten greedy at the wrong time, or and getting greedy at the wrong time is very easy, because everybody is making money, and you think that you have missed the bus, you get lured into it. So once you do this, I think get started somehow. Index fund, active fund, whatever fund, even a young person, 20-year-old, getting started with a micro cap fund, and does his SIP for 5 years, will end up being a big winner anyway. Just that he might have a heartburn in between. Oh, that this damn thing fell by 30% in one of the months. But if collectively the market is going up, then you know that your money is safe. You know that if you're investing for 10 years, your money is safe. Just make sure that you are not catching the market high. The risk of catching the market high is that if you invested in 2001, then it took 5 years for you to break even. If you invested in 2008 January, it would have taken another 4 years for you to break even. And the problem of those long periods for a new investor is that they don't have the patience. And those investors, and it becomes impossible for those investors to stick around, simply because an investor who comes at the last or the fag end of a boom comes with a huge expectation, and he's so greatly disappointed that he swears never to come back to the market again. True. And I've seen it in 1992, I've seen it in 2001, I've seen it in 2008, and we haven't seen a big fall thereafter. But I have come across people who in the month of March 2022, the COVID fall 30% in a month, and the people who got out, they never got an opportunity to come back. So obviously there are a lot of new avenues, but I've realized कि बहुत सारे themes भी आजकल popular है. There's AI, ESG, there is now EV also. So do you think कि these are sustainable themes that people should be investing into, or is it just like a viral trend that people are excited about, and then 3 years down the line they're going to be like, why did we ever invest in this? No, at this point they don't look sustainable. Like index fund, you are buying the Indian economy. You are buying the largest companies in the country. Not these ones. Some of these, as I told you, that mutual funds are a consumer product. People are creating fancy sounding, fancy looking, a product which strikes a chord with people. It's like Fair and Lovely. You create one and you make somebody aspirational that okay, this will improve you. Likewise, you can actually trigger greed here, that you can get wealthy because this is a trend you can relate to. I have seen infrastructure was a buzzword, and in 2008 everybody was launching an infrastructure fund, and everybody tried to launch an infrastructure fund yesterday. And after that, it has been a test of patience. 5-7 years it didn't work, and even now there is nothing extraordinary. So keep it simple, keep it boring, diversify, entrust your money to a good fund manager. If you can't find a good fund manager, put it in an index. I do my SIPs, but I want to ask you कि do you think कि मुझे अपना SIP करके, like every month money is going and I should chill out, or at some point maybe every few months के interval पे या every few years के interval पे, do you think that I should revisit and see if I'm even investing in the right place right now, or should I just let it be? First 3 years, don't do anything. Okay. And after that, do an annual check.
look at the same variables which you should choose, which you should look at when choosing a fund. You looked at that it is beating the benchmark. You looked at that it is a 4-star or 5-star fund. That is good enough. Yeah. If you are able to do these two things, that is still beating the benchmark, is still 5-star and 4-star, at worst 3-star, and it is still in the top quartile of the lower expenses. It's fine. You don't need to do anything. ओके एंड ये फंडा मुझे अगर मुझे पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना हो एवरी फ्यू ईयर्स अगेन लाइक आपके नीड्स एक्सपेंसेस योर लाइफ स्टाइल चेंजेस एवरी फ्यू ईयर्स तो डज द सेम अप्लाई फॉर रीबैलेंसिंग माई पोर्टफोलियो एज वेल No, rebalancing is a completely different story. To rebalance, you need to have an asset allocation. And I think, nobody should actually think of having an asset allocation for the first 5 years of their investment. ओके Asset allocation and rebalancing is basically buying an insurance policy. That when the market goes down, you have deep regret. या To save yourself from that regret, you start moving money in a very methodical way to fixed income so that that part of the money will never go down. And that also gets you an opportunity that if the market goes down, you will have money to invest when it goes down. And the simplest way of making money in the market is to buy cheap and sell when it goes up. But it's very hard thing to do. So you do it in a methodical way that, okay, you have chosen that, okay, this money is going to remain invested for 25 years. But once you have done it for 5 years and it becomes something meaningful, if the market comes down, you will have deep regrets, which the market will come down anyway, whether you do asset allocation or not. So what you do is you move 25% of your money into fixed income. Now, if the market comes down, this 75% which was equity will now be 70%. ओके Move your money from fixed income to equity so that it again becomes 75-25. This is rebalancing. या So to rebalance, you need to do asset allocation. To do asset allocation, you must have something meaningful. या Why do any asset allocation while you are beginning in the first year? You don't have anything to lose. इफ आई एम अ न्यू इन्वेस्टर तो मुझे इक्विटी और डेट के बीच में अपने पैसे को कैसे स्प्लिट करना चाहिए आपको ये नहीं करना चाहिए, या इतने आसानी से करना चाहिए कि अगर आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगा रहे हैं और आप डरे हुए नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाना चाहिए. तो उसमें आपका पैसा 1/3 पैसा आपका डेट में चला जाता है और 2/3 इक्विटी में रहता है. तो जब बाजार गिरता है तो आपको घबराहट नहीं होती या कम होती है. तो एक ये तरीका है लगाने का. दूसरा कि हर एक के पास डेट होना चाहिए. जो आपका इमरजेंसी फंड है वो डेट में होना चाहिए. ओके अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो कुछ इमरजेंसी का पैसा कुछ लॉकर में होना चाहिए, कुछ बैंक में होना चाहिए. कि अचानक अस्पताल जाना पड़े तो पैसा आपके पास हैंडी रहे, एक्सेसिबल आपके रहे. पास तो वो पैसा जो डेट में रहना चाहिए, कैश में रहना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में डेट होना चाहिए. तो आपको बेसिकली ये आपका जो जर्नी है उसको थोड़ा स्टेबल करने में डेट बहुत मदद करता है. तो शुरू में तो आप नहीं करेंगे, और अगर इस उतार चढ़ाव से अगर आप परिचय कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. क्योंकि अभी आप घबराने का फ़ायदा क्या, अभी आप तो शुरुआत ही कर रहे हैं. लेकिन जब एक बार पैसा आपका कुछ हो जाए, 5 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो और आपके पास वो साल भर के आपके आमदनी के बराबर जैसा रकम हो जाता है, तब जरूर एक एसेट एलोकेशन निर्धारित कीजिए कि आपका 1/5 पैसा फिक्स्ड इनकम में होगा. 20-80 का आप रेशियो फॉलो करेंगे, और 20-80 का रेशियो फॉलो करेंगे तो उसमें आप फिर रीबैलेंस करने के लिए ये आपके लिए आधार होगा. कि जब ये 20 और 80 का आपने डिसाइड कर लिया तो ये 20 अगर 25 हो जाएगा तब आप फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में लगाएंगे. अगर 80 अगर ये 90 हो जाएगा तब आप इक्विटी से पैसा निकाल के आप दोबारा उसको रीसेट कर देंगे अपने 80-20 पे. तो इसका नतीजा क्या होगा कि इक्विटी जब बढ़ेगा तब आप थोड़ा निकाल लेंगे, जब इक्विटी गिरेगा तब आप थोड़ा लगा देंगे. और यही मेथोडिकल तरीका है कि आप इक्विटी डेट में ये बदलते रहेंगे. और ये जो 80-20 का एलोकेशन है ये तब आपको करना चाहिए जब आपका 10 साल तक 15 साल तक पैसा लगा रहेगा. दूसरा, आपको फिक्स्ड इनकम में पैसा तब अपना निकाल के लगा देना चाहिए या लगाना ही नहीं चाहिए अगर किसी पैसे की ज़रूरत आपको 2-3 साल में है. क्योंकि उस पैसे से जो कि आपको बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से 3 साल में चाहिए, आपको मकान खरीदना और उसका डाउन पेमेंट करना है, तो वो आप आखिरी दिन तक वेट नहीं कर सकते. बाज़ार पे की निर्भरता आखिरी दिन तक नहीं हो सकती. तो वो आपको धीरे धीरे निकाल लेना चाहिए. उसका भी एक तरीका है कि अगर आपने मान लीजिए अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में बिल्ड किया है या इक्विटी फंड में बिल्ड किया है और आपको 1 साल के बाद मकान खरीदना है, तो जो डाउन पेमेंट देना है वो आप SIP करके आपने लगाया है, तो उसको भी आप SWP करके पैसा निकाल लीजिए. ओके एक दिन
या आप ये मत सोचिए कि नहीं ये बाजार का पीक है और उस दिन हम निकालेंगे। और अगर आपने मान लीजिए इन्वेस्ट करके 50 लाख 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है और उसमें से 20 लाख रुपए आपको निकालना है, 20 लाख रुपए निकालना है, तो अगले 10 महीने में 12 महीने में 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया करके आप निकाल लीजिए। तो आखिरी दिन तक बाजार में, और वो जो पैसा आप निकालें वो फिक्स्ड इनकम में रखें। तो आप बड़ी निश्चिंता से जाके अपना मकान खरीद पाएंगे। अगर आप इक्विटी मार्केट पे निर्भर करेंगे तो हो सकता है मकान नहीं खरीद पाए, क्योंकि जब बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा तब आपको लगेगा कि चलो बाद में खरीद लेंगे, और जब गिर जाएगा तो आपको लगेगा आप कैसे खरीद सकते हैं। और ये उतार चढ़ाव का दौर कभी ख़त्म नहीं होना है, इसलिए आपको मेथोडिकली लगाना चाहिए, मेथोडिकली निकालना चाहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। पैसा जब बढ़ जाए तब अपना फिक्स्ड इनकम एलोकेशन कीजिए। जब आप रिटायरमेंट के कगार पे आ जाइएगा तब आप देखिए कि आपको ये 50 इक्विटी 50 डेट कर लेना है। आप रिटायरमेंट से 8 साल पहले इसको 65% इक्विटी 35% डेट कर लीजिए, ये 20 से जो आप शुरू कर रहे हैं। तो ये बढ़ाना चाहिए, और शुरू में आप 100% इक्विटी रखिए, बढ़ने का मौका दीजिए, इकट्ठा कीजिए। तो इसका प्रिंसिपल यही है, आपको एक रूल बना के चलना चाहिए और इससे हिलना नहीं चाहिए। आई थिंक द बिगेस्ट इनसाइट इज कि जितना हम ध्यान इन्वेस्ट करने में लगाते हैं उतना ही हमें फोकस विड्रॉल में भी लगाना चाहिए। बिल्कुल, आखिरी दिन तक आप इंतजार नहीं कर सकते। So, sir, amazing interview. But one last question: do you have any word of advice for our viewers out there? Broadly, I would say that get started now if you have been not doing. Yeah. And do your job well so that you can keep earning. That's the best investment that you do. Yeah. That is what produces the earning and saving for you. Yeah. And once you have done this simple thing that I was referring to, don't listen to anybody else. Yeah. Your own rules and your own belief and your own confidence, your own discipline, your own patience, your own plan, they are the biggest drivers of your performance. Yeah. Not somebody's secret formula. Yeah. Don't expect any secret formula for anyone. Yeah. If somebody has one, he won't share it with you. True. Thank you so much, sir. That was a wonderful session. I learned a lot of new things, and I think मेरा सबसे बड़ा takeaway यही है that I have to methodical and I have to make it simple. Don't complicate it too much. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.